अधिक मास पुण्यपर्वामध्ये श्री शक्ती सेवा समिती सोलापूरच्या वतीनं दिनांक 22 मे ते 24 मे 2026 या 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमात जगद्गुरू श्री 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 सिद्धेश्वरानंद भारती महास्वामीजी यांच्या आशीर्वादानं श्री शक्तिपीठाधीश्वरी पूज्य माताजी श्री 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 रम्यानंद भारती महास्वामिनी यांच्या उपस्थितीत ऐश्वर्य लक्ष्मी सुवर्ण कुबेर महोत्सव संपन्न झाले। या महोत्सवामध्ये गुरुवारी सायंकाळी माताजींचे सोलापुरात आगमनासाठी दाजीपेठ येथील श्री व्यंकटेश्वर देवस्थानमच्या प्रांगणात भक्तिमय वातावरणात त्यांचे स्वागत करण्यात आले। त्यानंतर माताजींच्या हस्ते बालाजींची पूजा अर्चा करून 3 दिवस चालणाऱ्या कार्यक्रमाबद्दल माताजींनी सुमधुर वाणीतून दिव्य मार्गदर्शन केले। त्यानंतर भव्य रथातून माताजींचे सहवाद्य मिरवणूक दत्त चौक मार्गे साई मंदिरात आरती करून समारोप करण्यात आले। MIDC येथील महालक्ष्मी बँक्वेट हॉलमध्ये शुक्रवारी 22 मे 2026 रोजी श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी सुवर्ण कुबेर महोत्सवास प्रारंभ झाला। त्यावेळी श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी कुबेर होम मध्यवर्ती कमळाकार यज्ञ उभारण्यात आले। त्याभोवती अनेक यज्ञकुंड ठेवण्यात आले। 45 दाम्पत्य या सुवर्ण कुबेर होममध्ये सहभागी झाले होते। माताजींच्या हस्ते श्री लक्ष्मी पूजनानंतर विशेष द्रव्याच्या आहुतीने यज्ञास प्रारंभ झाले। यामध्ये कमलबीज, सुगंधित वनस्पतींची फळे, पाने, कमल पुष्प, विविध द्रव्य, वस्त्र, विविध फळे, फुले आदींचा समावेश होता। या यज्ञामध्ये 108 ऐश्वर्यप्राप्ती विशेष दुर्लभ द्रव्याने न भूतो न भविष्यती अशी पूर्णाहुती माताजींच्या हस्ते विविध द्रव्यांची आहुती देण्यात आली। शुक्रवारी सायंकाळी सुवासिनींच्या हस्ते कनकधारा स्तोत्रम म्हणत कुंकुमार्चना कार्यक्रमानंतर आरती व माताजींचे अनुग्रह भाषण संपन्न झाले। भाजमतमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मंथमीक्षणार्थं मंदाल संचमकरालय कन्यकायाः हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाति राज्यं वैराज्यं पारमेष्टिकं राज्यं धनधान्यं समृद्धिं देहि दापय त्यानंतर मंत्रोपदेशम यावेळी माताजींच्या हस्ते यज्ञकर्ते व भाविक यांना कुबेर पूजनासाठी कुबेर नाणी देण्यात आले। शनिवारी सकाळी सौभाग्यलक्ष्मी पूजा सुहासिनी पूजन 500 सुवासिनींच्या उपस्थितीत संपन्न झाले। या प्रसंगी सुवासिनींना साडी, चोळी, 16 शृंगार, पान, सुपारी, अक्षता, गंध, फूल देऊन त्यांची पूजा करून औक्षण करण्यात आले। भूतानां तामिहोपक्वये श्रियं महालक्ष्मी महालक्ष्मी सर्वसौभाग्यं देहि मे स्वाहा धार्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यता
सौभाग्यप्रदमहालक्ष्मीदेव्यै नमः परिमल गन्धविलेपनं समर्पयामि। आये नमः ॐ सुप्रसन्नायै नमः पादाभिमुखायै नमः ॐ प्रभायै नमः चन्द्रवदनायै नमः ॐ चन्द्रायै नमः। महाआरतीनंतर माताजींनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी माताजी म्हणाल्या, श्री शक्ती पीठमचे संस्थापक कृताल पीठमचे जगद्गुरू श्री 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 सिद्धेश्वरानंद भारती महास्वामीजी शंकराचार्य यांच्या दिव्य आशीर्वादाने धर्मप्रचार यात्रा प्रारंभ केली असून त्याचाच एक भाग म्हणून सोलापुरात 3 दिवसीय ऐश्वर्य लक्ष्मी सुवर्ण कुबेर महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात प्रथमच एक कार्यक्रम संपन्न होत असून या कार्यक्रमाद्वारे धर्मजागृती तसेच मानवाच्या कल्याणासाठी सोलापूरच्या वैभव प्राप्तीसाठी हे उपक्रम राबवत असल्याचे माताजींनी सांगितले. श्री शक्ती नारी यवम नारायणी नारी पूजन आपल्या सनातन संस्कृतीत फार महत्त्व आहे. यापुढेही महाराष्ट्रात व सोलापुरात वेळोवेळी धर्मजागृतीसाठी असे उपक्रम राबविले जातील असे यावेळी आपल्या मनोगतात सांगितले. శ్రీశక్తిపీఠం స్థాపించిన దగ్గర నుంచి సుమారుగా 7-8 సంవత్సరాల నుంచి కూడాను నారీ నమోస్తుతే నారీ ఏవ నారాయణి అనేటువంటి కార్యక్రమములను మనం చేస్తూ ఈ 5-6 సంవత్సరములలో సుమారుగా 60,000 మంది మహిళలకు మనం ఇటువంటి పూజా కార్యక్రమాలను చేస్తున్నాం. భారతదేశంలో ఏ పీఠంలోనూ ఇటువంటి ఇంత మహిళా శక్తి వైభవాన్ని మనం ఎక్కడా కూడా చూడము. మన శ్రీశక్తి పీఠం ఆధ్వర్యంలోనే ఈ కార్యక్రమాలు మనం చూడొచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా మనకు తెలుగు రాష్ట్రాలు, కాశీ, అలాగే మనకి అమెరికా, దాంతోపాటుగా లండన్, విదేశాల్లో కూడా మనకి జరిగింది ఇటువంటి సువాసిని పూజా కార్యక్రమం. మహారాష్ట్రలో సోలాపూర్లో ఫస్ట్ టైం పహలా కార్యక్రమం. विदेश में भी अमेरिका फ्रांस पैरिस यूके ఆస్ట్రేలియా ఆఫ్రికా వాళ్ళంతా కూడా అడిగారు. బట్ కోవిడ్ వల్ల బ్రేక్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. అమెరికా యూకేలో జరిగాయి, ప్యారిస్ ఫ్రాన్స్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో జరగబోతుంది. ఇక్కడ మన భక్తులు శక్తి సేవా సమితి ద్వారా శక్తిపీఠం కార్యక్రమాలు షోలాపూర్లో కూడా జరగాలి. సో హిందీ ये सभी लोग हमारा स्त्री शक्ति पीठ का भक्त लोग हैं. ఆ స్త్రీ శక్తి పీఠంలో ఉన్న స్త్రీ శక్తి పూజ షోలాపూర్లో కూడా చూపించాలి అని ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని కార్యాచరణ ప్లాన్ చేశారు. आणि पूर्ण नॉर्थ इंडियामध्ये होणार आहे. मी एकदम गर्वाने सांगते की माझ्या मताचं सर्व कोणच नाही आहे. जे स्त्रीला पूजनीय वंदनीय जे आहे हे आमच्या पीठापासून सुरू झालेले आणि हे आपल्या प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे की इथून पूर्ण भारत देशापर्यंत पोहोचवणं आपलं कर्तव्य आहे. आपली हिंदू संस्कृती प्रत्येक स्त्रीमध्ये शक्ती जागृत करणं, प्रत्येक पुरुषामध्ये पण स्त्री वंदनीय पूजनीय हे बघण्याचा दृष्टिकोन आणणं हेच आमच्या पीठाचं संकल्प आहे. जिजाबाई आणि भवानी मातेला आपण कसं पूजा केलं तसंच पूजा आपल्याला प्रत्येक स्त्रीला इथं करायचं आहे आणि तेच आमचा संकल्प आहे. प्रत्येक स्त्री ही पूजली गेली पाहिजे हेच आमचा संकल्प आहे. भारती महास्वामीची शिष्य आहे आणि माझे पूज्य माताजी श्री श्री रम्यानंद भारती महास्वामींची मी शिष्य आहे आणि माझे गुरुदेव आणि माझे माताजी वाले जे सांगते प्रत्येक स्त्री वंदनीय पूजनीय आहे. जे मी तिथं पाहिलं आणि माझ्यामध्ये जे बदल आलं, मी अगोदर खूप मॉड होते. जेव्हा मी ह्याच्यामध्ये बसले तेव्हा मला कळालं की आपली संस्कृती आपण हे जपायला पाहिजे आणि आपल्यामध्ये पहिल्यांदा अनुकरणमध्ये आणायला पाहिजे. जेव्हा मी आणले तेव्हा माझ्यामध्ये खूप बदल झाला आणि मला वाटलं जे मला अनुभव आला तेच अनुभव प्रत्येक स्त्रीला यायला पाहिजे. आणि पीठांच्या द्वारे आणि माझ्या गुरुदेवांच्या आणि माझ्या महाराजांच्या आशीर्वादाने मी अमेरिकेमध्ये राहून सोलापूरमध्ये सुरू केलेला आणि हे कोणीतरी पुढाकार द्यायलाच पाहिजे. त्यामुळे मी इथं पुढाकार घेऊन हे परंपरा सुरू केली. शनिवारी सायंकाळी 800 महिलांच्या उपस्थितीत ललिता सहस्त्रनाम कुंकुमार्चना संपन्न झाले. यावेळी माताजींच्या हस्ते श्री यंत्रम ललिता देवींचे फोटो भाविकांना देण्यात आले. त्यानंतर माताजींचे अनुग्रह भाषण संपन्न झाले. त्यानंतर मंत्रोपदेशन व आशीर्वचन संपन्न झाले. कार्यक्रमाच्या शेवटच्या दिवशी रविवारी मानवाच्या कल्याणासाठी चित्रलेखा कुबेर कल्याणोत्सव कुबेर पट्टाभिषेकम भक्तिमय वातावरणात संपन्न झाले. श्री शक्तीपीठमवरून आलेल्या पंडितांच्या हस्ते विधिवत कल्याणोत्सवम सोहळा शास्त्रोक्त पद्धतीने अत्यंत धार्मिक आणि उत्साही वातावरणात पार पडला.
यावेळी चित्रलेखा कुबेर स्वामी यांना अलंकार करण्यात आले. कंकण धारणा, यज्ञ, पवित्र धारणा, कन्यादान, मंगळसूत्र धारण, दिव्य मंगलाष्टके संपन्न झाल्यानंतर चित्रलेखा समवेत श्री कुबेर स्वामींना मोती, विविध फुले आदी अर्पण करण्यात आले. यावेळी पुरोहित, यजमान व भाविकांनी आनंदोत्सव साजरा केले. स्वामींना अर्पण करण्याचे हार हातामध्ये घेऊन नृत्यातून आनंद उत्सव साजरा करण्यात आला. यावेळी या कार्यक्रमाचे आयोजक USA वरून आलेल्या सौ वैशाली गाजूल व श्री उमेश गाजूल यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू वाहत होते. यावेळी संपूर्ण भाविक मंत्रमुग्ध होऊन या कार्यक्रमात तल्लीन झाले. त्यानंतर कुबेर स्वामींचा पट्टाभिषेक कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी माताजींच्या हस्ते कुबेर स्वामींना सुवर्ण मुकुट धारण करण्यात आले. त्यानंतर మాతాజీంచే కార్యక్రమావిషయీ అనుగ్రహ భాషణం సంపन्न झाले. ఇక్కడికి సోలాపూర్కి రావాలి అని సంకల్పించినటువంటి వ్యక్తి ఆవిడే ప్రధానంగా శ్రీమతి వైశాలి. ఆవిడ అమెరికాలో ఉంటా కూడాను మన పీఠానికి వచ్చి సంవత్సరంలో 2-3 నెలల పాటు ఉండి చక్కగా ఆవిడ అక్కడ హోమాలు పూజలు అన్నీ చేయటం మాత్రమే కాకుండా మేము ఇక్కడికి రావాలి, మన పీఠ దేవతలు ఇక్కడికి రావాలి, మా స్వామివారు అక్కడ చిత్రపటం నుంచి మిమ్మల్ని అందరినీ అనుగ్రహిస్తున్నారు, రావాలి మీరు రండి అని అడిగారు. అడిగితే రావాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తూ నేను చెప్పాను, ఎక్కువ శ్రమ పడకండి, ఎక్కువ కష్టపడకండి అని. ఆవిడన్నారు, నేను ఒక్కదాన్నే కాదు మాకు 100,000 మంది భక్తులు ఉన్నారు అని చెప్పారు, చూపించారు. ఇదిగో ఇక్కడ అందరూ కూడా వచ్చారు, చాలా సంతోషం. వారి శ్రీవారు ఉమేష్ ఇక్కడ, అలాగే వారి కుటుంబ సభ్యులు శ్రీమతి తేజస్విని, ప్రశాంత్, అలాగే అస్మిత, వారి హస్బెండ్ సనత్ కుమార్, శాంత, శ్రీ నాగేశ్వరరావు, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మా పీఠ భక్తులు అవటం వల్ల మేము వాళ్ళు ఇక్కడికి రావటం అనేటువంటిది జరిగింది. అయితే ఇక్కడికి రావటం వల్ల ఏం జరిగిందనంటే మా శక్తిపీఠ కుటుంబం వీళ్ళతో పాటుగా ఇన్ని 100 మందిని కలుపుకోవటం జరిగింది. सदरील 3ही दिवसीय कार्यक्रमात आयोजकांकडून भाविकांसाठी सकाळ संध्याकाळ रुचकर महाप्रसादाची व्यवस्था करण्यात आली होती. रविवारी सायंकाळी सरस्वती पूजनाने या कार्यक्रमाचा समारोप करण्यात आले. यावेळी माताजींनी सरस्वती पूजन करून मंत्र उपदेशानंतर विद्यार्थ्यांना पेन डायरी देऊन अनुग्रह भाषणातून मार्गदर्शन केले. त्यानंतर या भव्य दिव्य 3 दिवसीय कार्यक्रमाचे आयोजक USA वरून आलेले सौ वैशाली उमेश गाजूल व उमेश दुबराज गाजूल, या कार्यक्रमाचे आयोजक डॉक्टर सनत कुमार नागेश्वरराव अनुमल्ला, या कार्यक्रमाचे आयोजक हैदराबाद वरून आलेल्या सौ तेजस्विनी प्रशांत इरावत्ती, या कार्यक्रमाचे आयोजक श्री व सौ शांता व नागेश्वरराव अनुमल्ला, या कार्यक्रमासाठी ऑल उपलब्ध करून दिलेले यल्लप्पा गड्डम व काशीनाथ गड्डम बंधू, तसेच या कार्यक्रमासाठी सुरुवातीपासूनच आयोजकांना कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी मार्गदर्शन करणारे व प्रचाराची धुरा सांभाळणारे स्वरांजली चॅनलचे प्रमुख श्री दयानंद बांबड्याल, या सर्वांचे विशेष सत्कार माताजींच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच सेवेसाठी सहकार्य केलेले श्रीनिवास बिंगी, व्यंकटेश चिलका, पुष्पा चाटला, तसेच वृत्तनिवेदिका रेणुका बुधारम, प्रतिनिधी कल्पना हर्षनपल्ली यांचाही यावेळी माताजींच्या हस्ते सन्मान करण्यात आले व आशीर्वाद प्रदान करण्यात आले. या कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी सौ वैशाली उमेश गाजूल व उमेश दुबराज गाजूल, डॉक्टर सनत कुमार नागेश्वरराव अनुमल्ला परिवार, सौ तेजस्विनी प्रशांत इरावत्ती, स्वरांजली परिवार, श्री शक्तीपीठमचे सर्व पुरोहित, वृद्ध व्यवस्थापक तसेच सोलापुरातील सेवकांनी विशेष परिश्रम घेतले व पत्रकार बांधवांचेही सहकार्य लाभले.